हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राइट, इस क्वेश्चन में क्या है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, सीरीज में डाला हुआ है 12 वोल्ट से। राइट, सो देख लेते हैं। सी की ऐसे कैपेसिटेंस है, ओके, और ऐसे रेजिस्टेंस है, ओके, और इसमें एक बैटरी ऐसे लगाया हुआ है। सी की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी है उसकी वैल्यू दी गई है। राइट, उसके बाद बोल रहा है कितने टाइम आफ्टर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो पहले बताइए मुझे कि इस वाले में चार्ज जो Q है, राइट, इसके क्रॉस कितना आएगा। राइट, T इज इक्वल टू जीरो पे, राइट, T इज इक्वल टू राइट जीरो पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी जीरो, और टाइम इनफाइनाइट होगा तो चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस पे Q जो हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। राइट, ये आपको पता है ऑलरेडी। Q नॉट दैट इज Q मैक्स। तो Q मैक्स कितना हो जाएगा बताइए। राइट, Q मैक्स होता है जब इन्फिनिटी पे, राइट, तो इन्फिनिटी पे जब जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा, तो इस पे करंट जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। So I can say Q max will be 12 into C. C is the capacitance. Okay, good. So 1 minus e raised to power minus t upon RC, राइट, ये हो गया Q। तो बताइए राइट, जब चार्ज इसके ऊपर Q है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। एज यू ऑल नो Q इज इक्वल टू CV. So from here I can say V is equal to Q upon C. So from here if I write here I can take this Q by C this side. So Q upon C will become V. किसके क्रॉस, कैपेसिटेंस का क्रॉस, तो इसको VC कर देते हैं। राइट, ओके, सो दिस विल बिकम 12 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। गुड, राइट, ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस आ गया। राइट, सो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज 1। ओके, नाउ इसमें करंट कितना हो जाएगा, देखिए करंट कितना होगा। राइट, करंट विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ टाइम। सो सी at t is equal to 0 the current will be maximum, and at t is equal to infinite the current will become 0. So the graph will be decreasing. So I can say I will be I naught e raised to power minus t upon RC. Good, right. So here how much I max will be there? Right, I max will be there at t is equal to 0 only, right? So t is equal to 0, how much I max, right? At t is equal to 0, this will be short circuit. So the whole potential difference will be across this. So I can see here, this is 12 upon R. So I max will be 12 upon R. Okay, and this is e raised to power minus t upon RC, right? So I can take this IR this side. So this will become I into R, and that is become V is equal to IR. So this is the potential difference across resistor. ठीक है, तो so I am calling this VR. So this will become 12 e raised to power minus t upon RC, right? So let us call this is equation 2. Now you see, I know the potential difference across C also, potential difference across R also, right? Now it is saying in the question, the potential difference across the capacitor is 3 times. So potential difference across capacitor, that is VC, is 3 times the potential difference across resistor, that is 3 is equal to VR. So this will give me another equation. So let us see, VC is how much? VC is this one, 12 1 minus e raised to power minus t upon RC is equal to 3. VR is this, that is 12 into 3 raised to power minus t upon RC, right? So this 12 will get cancelled out. So let us solve this here now. You will see this minus will go that side. Okay, so right, see this minus will go that side. So this will become 1 is equal to 4 e raised to power minus t upon RC, right? So this will become 1 upon 4, that is equal to e raised to power minus t upon RC. If I take ln both side, so this will become how much? Ln 4 minus is equal to minus t upon RC, right? I have taken ln both side. So this will get cancelled out. Okay, now this can be taken as 2 ln 2, that is equal to t upon RC. So from here I can say 2 ln 2 into R is C. How much R is there? 2.5 into 10 raised to power 6 into how much C is there? C, right? Capacitance is 4 into 10 raised to power minus 6, and this is becoming time. Now you all know, okay, the value of ln2 is given, see, 0.693. So 2 into 0.693 into this will become, right, this will cancel out.
So this will become 2.5 into 4 is equal to t. Now if you'll see how much, right, if you'll multiply this all, you will get 13.86 second. Okay students, I hope you understood this question.